Hello guys, I welcome you back in another video, and here I am going to discuss these two date and time data types in SQL. I will be discussing how we create columns with these data type, how we insert values of date and time in cells, and certain functions related with date and time. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल खोलूँगा एंड यहाँ पर अपनी फेवरेट थीम सेट करूँगा जो कि है होम ब्रू। एंड यस, अगर छोटा दिख रहा है तो मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ फॉन्ट का। नाउ इट इज़ परफेक्ट। नाउ आई वांट टू एंटर इनटू माई स्क्वेल, आई वांट टू ओपन माई स्क्वेल हेयर। तो मैं एक कमांड दूंगा माई स्क्वेल, देन उसके बाद मैं लगाऊंगा यू फ्लैग फॉर एंटरिंग द नेम ऑफ द यूज़र विच इज़ रूट इन दिस केस। यहाँ पर मैं यू फ्लैग से बता रहा हूँ कि मैं एज अ रूट यूज़र लॉगिन करना चाहता हूँ, एंड जब मुझे लॉगिन करना है तो पासवर्ड भी देना पड़ेगा। आई वांट टू गिव द पासवर्ड, सो आई एम प्लेसिंग हियर द p flag also. Now it is asking for a password. I will enter the password which I have created while installing MySQL here in my system. I have entered it, then enter, and it is showing the welcome screen. It is showing welcome to MySQL monitor, and here to the left of the blinking cursor it is written as MySQL. तो यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि we will give a MySQL query command and it will show us the output. Okay, first I will check how many databases are currently there. So I will run the query, so databases, and there are quite a few databases already created here. Let me delete this date time database जो मैं पहले बना चुका हूँ while I was revising this topic. So I will be using drop, then database keyword, database, then database name. Here in this case it is date time, like this. Some error. Okay, we have missed A after B. Yes, now it should be correct. Yes, it has been deleted. Now let me show you कि ये डिलीट हो गया सही से। देखिए यहाँ पर अब लिस्ट में नहीं आ रहा है डेट टाइम। तो चलिए फिर से बना लेते हैं इसको। कैसे बनाते हैं डेटाबेस? क्रिएट डेटाबेस, फिर से रह गया डेटाबेस, दैन डेटाबेस नेम, विल गिव सेम नेम, डेट टाइम, लाइक दिस. यस, इट हैज़ बीन क्रिएटेड. बट जितने भी डेटाबेस हैं जो हम टेबल बनाएंगे वो किस डेटाबेस में बनेगा? वो टेबल उस डेटाबेस में बनेगा जो यहाँ पर सिलेक्टेड है. तो पता करते हैं कौन सा सिलेक्टेड है डेटाबेस. ये कैसे करते हैं? इसके लिए कमांड होती है select डेटाबेस एंड देन ब्रैकेट्स, एंड यू कैन सी दैट इट इज शोइंग एज नल. तो अभी कोई डेटाबेस सिलेक्टेड नहीं है, तो सिलेक्ट कर लेते हैं. सिलेक्ट करने के लिए क्वेरी होती है यूज द डेटाबेस नेम, and in our case it is date time. Another time, गलती हो गई, date time. Yes, now it is showing database change. तो अब हम कोई भी क्वेरी चलाएंगे, कोई भी टेबल क्रिएट करेंगे तो किस डेटाबेस में चलेगी? इसी में चलेगी, डेट टाइम में. ओके, तो अब इसमें कितने टेबल हैं? मैंने अभी आपके सामने बनाया है, फिर भी देख लेते हैं. इसमें कोई टेबल तो नहीं है, होना नहीं चाहिए. सो टेबल्स एम्प्टी सेट, सो देयर आर नन. चलिए टेबल बनाते हैं जल्दी से. क्रिएट टेबल पर्सन, नाम रखते हैं टेबल का. ओके, पहला कॉलम होगा नेम और इसका डेटा टाइप होगा varchar जो 50 कैरेक्टर्स ले सकता है. नाउ अब दूसरा कॉलम रखते हैं
बर्थ डेट। ओके, इसका डेटा टाइप होगा डेट, एंड नेक्स्ट होगा बर्थ टाइम, इसका डेटा टाइप होगा टाइम। एक और डेटा टाइप होता है इससे रिलेटेड डेट टाइम से, इट इज़ बर्थ डेट टाइम, सॉरी डेटा टाइप इज डेट टाइम। लेट अस क्रिएट एक कॉलम बनाते हैं बर्थ dt, एंड इसका डेटा टाइप रखते हैं डेट टाइम लाइक दिस। okay, now you can close the bracket and then semicolon. Yes, our table has been created. Now we do show tables. Yes, there is one table person, and let us check how it is. Person with describe command. Yes, now we can see the column names and their data type. Now let us insert one row here with insert query, insert, and then into table name it is person, then in bracket we will write the column names. It is name, birth date, and birth time, birth dt। ठीक है, तो इसमें हम क्या इंसर्ट करेंगे, एक पर्सन का नाम होगा, उसका बर्थ डेट होगा, बर्थ टाइम होगा, और डेट एंड टाइम दोनों होगा साथ में, एक ही सेल में स्टोर हो रहा होगा। तो फिर क्या होता है, कीवर्ड रो इंसर्ट करने के लिए फिर हम लिखते हैं वैल्यूज़ कुछ इस तरह से, फिर हम ब्रैकेट में जो भी कॉलम है, जो भी रो में हम वैल्यूज़ देना चाहते हैं वो यहाँ पर देंगे अकॉर्डिंग टू द कॉलम लिस्ट दैट वी हैव रिटन अर्लियर इन द ब्रैकेट्स। तो पहले तो हम नाम लिखेंगे, एक रैंडम नाम ले लेते हैं, रमेश। ओके, किसी लंबे चौड़े आदमी का नाम लग रहा है रमेश, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, बर्थ डेट ले लेते हैं, कुछ पुराने ही होंगे ये, लेट अस टेक 1985, एंड महीना ले लेते हैं जनवरी, और डेट भी ले लेते हैं जनवरी। तो ये तो होता है फॉर्मेट डेट का, इसमें ईयर तो पहले आता है, देन मंथ, देन डे ऑफ द मंथ, डेट इन द मंथ, देन वी विल इंसर्ट टाइम होता है 24 आवर फॉर्मेट। तो यहाँ पर मिल सकते हैं कुछ भी, 10 तो पहले आएगा आवर्स, देन मिनट, लेट से 20, देन सेकेंड्स, लेट से 11। ओके, तो रमेश जी हैं एक पर्सन, इनका बर्थ डेट बर्थ टाइम इंसर्ट कर दिया है। अब हम इंसर्ट करेंगे इनका बर्थ डेट टाइम। तो जो कॉलम होता है जिसका डेटा टाइप होता है डेट टाइम, उसमें हम जो वैल्यू इंसर्ट करेंगे उसमें दोनों चीज़ें होंगी, डेट और टाइम। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डेट और टाइम दोनों होंगी, और दोनों चीज़ों को कैसे एक ही सेल में डालेंगे, एक ही साथ कैसे इंसर्ट करेंगे, तो कोट्स के अंदर पहले डेट लिखेंगे, देन स्पेस, देन टाइम, जैसा हमने अभी लिखा है उसी तरह से, बस दोनों को साथ में लिखेंगे और बीच में स्पेस आ जाएगा कुछ इस तरह से, 1985 01 देन स्पेस एंड 10:20:11 कुछ इस तरह से, देन सेमी कॉलन। सही लग रहा है ना, एंटर। गड़बड़ हो गई कुछ, बट टाइम नहीं है, गड़बड़ कर दी, स्पेलिंग देयर इज सम टाइपो। ओके, ऐसे ही जाना पड़ेगा। ओके, कॉलम नेम ही गलत है, BRITH कर दिया है, यहाँ पे भी कर देते हैं RITH।
ओके, तो इंसर्ट हो चुकी है वैल्यू. नाउ लेट्स सी. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन. फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन. ओके, सो एज यू कैन सी कुछ इस तरह से हमें आउटपुट आ जाएगा. अब there is one thing we can use in here MySQL to show the current date, current time. So the functions are like this: select current date and then brackets like this. It is showing me the current date. It is the date of now when I am recording this video, 5 March 2025. Similarly एक फंक्शन होता है कर टाइम, जिससे कि हमें नहीं होता ये. Okay, I went placed brackets like this. I have to do. It is showing me 0016, so I am recording here at midnight. It is showing me the correct time 16:55. Okay, as you can see here 12:17. It has become now 17. When I ran the query it was 16. Okay, तो ये फंक्शन हो गया. एक और होता है select now फंक्शन. इससे क्या होता है, डेट टाइम दोनों आ जाती है. इसका डेट टाइप क्या होता है, डेट टाइम. ओके, हमने देख लिया करंट डेट कैसे देख सकते हैं, करंट टाइम कैसे देख सकते हैं, और दोनों कैसे देख सकते हैं. नाउ अब हम ये देख ही चुके हैं, सीख ही चुके हैं कि थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या देखा हमने. कि there are certain data types related to date and time. First one is date, फिर होता है टाइम, एक और होता है डेट टाइम. डेट टाइम इसी की तरह होता है एक टाइम स्टैम्प. ओके, तो ये तो होते हैं डेट टाइप. डेट टाइम और टाइम स्टैम्प कुछ कुछ सिमिलर ही होते हैं. इनमें इतना ही अंतर होता है कि ये टाइम स्टैम्प डेटा टाइप जो है कम स्टोरेज यूज़ करता है और ये ज़्यादा यूज़ करता है. जब कम स्टोरेज यूज़ करता है तो ये डेट की कम रेंज को सपोर्ट करता है. वी कैन एंटर हेयर फ्रॉम I think some 1942 2038, something like this. I am not sure, but it supports a less range of dates than this data type, date time. Let me show you opening the documentation. Okay, date time functions. What we want data types. Which data type we want. Yes, date time data type. And here you can see we have a date time, date time, timestamp. Yes, it is from, so timestamp supports the range from 1971 to 2038 only, but our date time
data type supports from 1000 to 9999 here. So it supports vast range, so it takes more memory. This is the only difference. Okay, we have seen this, and then we have seen certain functions like current date. It returns as the current date, then current time. And if we want to see both current date and time, we have function now. Let me show you these function here in this documentation. Yes, so now function is abbreviation, short form for this current timestamp, and current date is short form of this current date. Current time is short form this of this current time. तो नाउ वी नो, हम इनको यूज़ करके देख चुके हैं ये फंक्शन कैसे काम करते हैं. नाउ if we want to insert the current time, current date and current date time in our row in person table, then how can we do that? We'll simply use the insert query, insert into then table name like this, then column names, and columns are like this: name, birth, date, and birth time, birth dt. ऐसे तो थे कुछ कॉलम. यस, यहाँ पर गलती थी, यहाँ पर था birth dt. Okay, then values, then I will give some random name, Suresh. Then in place of birth date I will write current date. Okay, in place of birth time I will write current time. So the Suresh is going to born just now, and here in birth date time I will write now function and then semicolon. Okay, again I have done one mistake, that column name is name, not names. I will correct it. Yes, now it should work. Again I have to do it. Yes, now it is correct. I forgot H here. Okay, yes, it has been inserted. Now let's see. Select star from person, and you can see this is today's date, and this is current time, and these both are written together. Yes, now we have all learned that how we can use these functions current date, current time, and now to insert certain things in our table, and these are very useful. ये बहुत यूज़फुल होते हैं. जब भी कुछ इवेंट हो रहा हो तो उसका करंट टाइम हमें इंसर्ट करना है अपने डेटाबेस में, तो हम कुछ इस तरह से ही इंसर्ट करेंगे. ऑल राइट, now let us try some more functions, date functions. There is a function let me clear it, clear page. Okay,
एक फंक्शन होता है, कुछ फंक्शन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट वंस। एक होता है डे, जो कि डे रिटर्न करता है। देखते हैं अभी किसका डे रिटर्न करता है। एक होता है डे ऑफ वीक। ये फंक्शन इनपुट में क्या लेते हैं, डेट लेते हैं। डे ऑफ ईयर, ओके, मंथ नेम, ईयर। इनको चला कर देखते हैं कैसे काम कर रहे हैं ये। ओके, तो मैं जानना चाहता हूँ कि सुरेश का जो बर्थ डेट है उसका डे कौन सा है। ओके, तो आई विल यूज सिलेक्ट डे and then I will pass birth date in the brackets birth date कुछ इस तरह से। अब from person where name is equals to Ramesh। Okay, so it is showing us the date 1. So it is only giving the date part out of whole date. Yes, अगर हमें डेट की जगह डे ऑफ वीक चाहिए तो हम लिखेंगे यहाँ पर डे ऑफ वीक। और कौन सा वीक है ये, तीसरा। ठीक है, क्या है यहाँ पर, रमेश की डेट है 1/1, डे ऑफ वीक दे रहा है 3। I'm also confused, let's check the documentation। Day of week, return the weekday index। Okay, it is giving us 3। 1 is for Sunday, 2 is for Monday, 3 is for Tuesday। Okay, तो इस दिन 1 जनवरी 1985 को क्या होगा, ट्यूसडे। इट इज शोइंग अस द वीकडे in the format of number where 1 stands for Sunday and 2 stands for Monday and 3 for Tuesday and so on, 7 stands for Saturday। ओके, ये देख लिया। अब देखते हैं एक और फंक्शन होता है डे ऑफ ईयर। यहाँ पे आ रहा है 1 डे ऑफ ईयर। ये क्या होता है 1 से 36। ओके, ये कौन सी डे है ईयर का, 1 से लेकर 366 तक, तो पहला ही दिन है इसलिए 1 रिटर्न कर दिया। ओके, नाउ लेट्स ट्राई विद मंथ नेम कि सुरेश का बर्थडे किस मंथ में आता है। मंथ नेम जनवरी में आता है। ईयर कौन सा है, सो ईयर फंक्शन विल गिव अस ओनली ईयर फ्रॉम दिस birth date like this। Okay, 1985 is the year in which Ramesh born। Okay, these were some date functions, let's try some time functions। in the time, so I will make it time, there is a function or function, but time। Okay, so hour is showing as 10 because we know that when Ramesh born it was around 10 in the morning, so it is showing only the hour part। Similarly, if we write in place of hour minute, it will show us minute। And like this we have
हमने देख लिए हैं कुछ डेट फंक्शंस एंड टाइम फंक्शन इंपॉर्टेंट वंस. सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. यहाँ पर हमने एक्सप्लोर करा डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स एंड सम ऑफ few important functions that are related with date and time. I hope you found this video useful. If you like my videos, you can consider subscribing my channel, and we'll meet in the next video. Till then, bye bye.